Shall I start? Hello, Assalamu alaikum. Welcome from Azm-e-Falah, Pakistan to you all. So today we are having the first webinar in a series of our SSA programs, blood donation drive for thalassemia patients. Right. तो सबसे पहले हमारा जो वेबिनार है उसका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग थैलेसीमिया, डीमिस्टिफाइंग द साइलेंट डिसऑर्डर। मैं बताता चलूं कि एहसास है प्रोग्राम है क्या। द प्रोग्राम डायरेक्टर, द प्रोग्राम मैनेजर ऑफ एहसास प्रोग्राम इज मिस्टर मोहम्मद अहमद मूसानी, who is also director operations at Azm-e-Falah, Pakistan. And I am Ashar Mohammed Shafi, uh, patron in chief of Azm-e-Falah, Pakistan, and I'll be moderating the session today. Right. So we have uh, invited Miss Saira Bano Munir as our chief guest, as our guest speaker today in this webinar, who will be speaking on thalassemia. She is an MS in cancer biology and therapy, and also studied applied zoology, and she teaches at Government College for Women at FB area block 16. So I'll request the guest speaker to continue on the session. Thank you. Thank you, Asher. Assalamu alaikum to everyone. And this is Saira. Thank you, Asher, very much for inviting me. And I'm very much I really appreciate your efforts, and I'm very much obliged to be part of this campaign, I would say. Now, introduction to thalassemia. You people ask me to discuss about thalassemia. So, thalassemia is an inherited blood condition. It's a disorder, and usually the disorders or syndromes that are congenital, that it means they are there with the birth of the person. तो इनको हम ना सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, we cannot cure them completely. So thalassemia is one of those conditions. What is thalassemia actually? When a person is unable to produce enough hemoglobin or a right amount and right form of hemoglobin, then it's called a person has acquired thalassemia. What is hemoglobin now? Hemoglobin is actually a protein. Word heme is for iron and globin is for protein. This is the only kind of protein or substance in an organism's body or in a human's body that can absorb oxygen. As we all know that we need oxygen to live, to survive. All the living cells need oxygen to survive, and they get this oxygen by different methods. For humans who take this through air, we breathe in the air and we absorb the oxygen and we exhale out the carbon dioxide. So when this oxygen enters the body, what happens that our RBCs, red blood cells in our body, उसमें hemoglobin होता है. Hemoglobin is a certain kind of protein that has iron element in the form of protein, that it binds to that oxygen and makes oxyhemoglobin. और जब ये oxyhemoglobin वाला blood हमारी body में जाता है, cells in tissues which are respiring, in fact which are producing energy, they take this oxygen and utilize it in the process. लेकिन क्या होता है कि अब जब किसी शख्स के पास हीमोग्लोबिन नहीं है, उसके आरबीसी सही नहीं है, because the person has got a genetic disease thalassemia from the parents, तो उसके पास अब जीना की कोई जो है ना वो उम्मीद बहुत कम होती है, बहुत थोड़ी हो रही होती है. Reason it is it has got lungs, it has got breathing system, it has got blood and everything, but due to the lack of this hemoglobin, a normal kind of hemoglobin, that person is unable to acquire this free oxygen from air, and thus it's unable to, he or she is unable to produce its own energy. तो इस issue को, इस condition को कहते हैं thalassemia. It's a lifelong condition since birth till death. अब थैलेसेमिक कंडीशन समटाइम्स डिसाइड कर रही होती है कि इसकी लाइफ स्पैन कितना होने वाला है. Is there possibility for the person to live longer or a short or for a shorter span? तो हम क्या करते हैं या किया क्या जाता है मेडिकली या बायोलॉजिकली, इनकी मैनेजमेंट की जाती है.
मैनेजमेंट जो है वो इस सिंस बर्थ स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे ही ये थैलेसेमिक कंडीशन जो है वो डायग्नोज होती है, इसको स्टार्ट करना पड़ता है टू प्रोवाइड देम विद टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ एक्चुअली। तो इसमें आगे देखते हैं कि हम आगे क्या है। जी, there are actually two variants of thalassemia, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। ये अल्फा और बीटा थैलेसीमिया क्या है? हीमोग्लोबिन जो हमारा प्रोटीन है, जो मॉलिक्यूल है, इट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स, और इसमें मिलियंस ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं व्हिच आर मेकिंग दिस सिंगल प्रोटीन। तो इसके दो पार्ट्स हैं एक्चुअली, अल्फा प्रोटीन है एक पार्ट इसका, और दूसरा पार्ट इसका बीटा प्रोटीन है। अब कुछ लोगों के पास जेनेटिक, एंड दिस कंडीशन इज ड्यू टू एक्चुअली जेनेटिक म्यूटेशंस। म्यूटेशंस जो है वो जेनेटिक genetic mutations are actually abrupt change in genetic material of a living organism। कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉर्मल जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है हमारी बीइंग हेल्दी ह्यूमन, अगर वो डिफरेंट हो जाए तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। तो ड्यू टू दीज म्यूटेशंस कुछ लोगों का अल्फा पार्ट खराब हो जाता है हीमोग्लोबिन का। अगेन ऑक्सीजन इज अनेबल टू बाइंड टू द हीमोग्लोबिन बिकॉज हीमोग्लोबिन डजंट लुक द नॉर्मल वन। और कुछ लोगों का, तो हम ऐसे लोगों को अल्फा थैलेसेमिक कहते हैं। और जबकि कुछ लोग जो होते हैं उनका बीटा पार्ट खराब हो जाता है, बीटा वाला प्रोटीन जो है सही शेप का नहीं होता। अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, ऑक्सीजन इज अनेबल टू बाइंड टू द प्रोटीन। तो हम ऐसे लोगों को बीटा थैलेसेमिक कहते हैं। एक्चुअली दो डिफरेंट म्यूटेशंस की वजह से होता है, इसकी वजह से थोड़े से उनके डिसऑर्डर में उनकी जो सिम्टम्स उनमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। दैट्स व्हाई दे नेम देम डिफरेंटली। अच्छा जी, causes of thalassemia. This disorder is solely based on genetic mutations, and it is passed through parents, through inheritance। ठीक है, from parents to through inheritance। जब पेरेंट्स जो है ऑफस्प्रिंग्स बना रहे होते हैं तब ये उसका जीन भी साथ में दे देते हैं, और इसकी वजह से ये थैलेसेमिया होता है किसी को भी, कि उनका हीमोग्लोबिन जो है वो उसका प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाए। एंड इट इज सोलली एन इनहेरिटेड डिजीज, और ये उस म्यूटेटेड जीन की वजह से होती है। बहुत कोई रेयर चांसेस हैं कि वहां पे अगर ये म्यूटेशन abruptly हुई हो किसी के अंदर, अदरवाइज दे आर 99.9% इनहेरिटेड वंस। एंड स्पेशली यहाँ मैं मेंशन करूंगी इस बात को कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, माइनर थैलेसीमिया एंड मेजर थैलेसीमिया। माइनर थैलेसीमिया पीपल आर आल्सो नोन एज द कैरियर्स ऑफ थैलेसीमिया। होता क्या है कि when both the parents carry the gene, और वो दोनों पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग को ये इनहेरिट कर देते हैं, और किसी एक बेचारे ऑफिस स्प्रिंग के अंदर ये दोनों पेरेंट्स की तरफ से आ जाती है, देन ओनली द पर्सन बिकम्स थैलेसेमिक पेशेंट। अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक इस जीन को कैरी कर रहा है और एक इनहेरिट कर रहा है, और जबकि दूसरा पेरेंट बिल्कुल नॉर्मल है, वो बिल्कुल भी कोई इन डिफेक्टेड म्यूटेटेड या थैलेसेमिक जीन नहीं दे रहा, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की दे रहा है, तो देन द पर्सन बिकम्स थैलेसीमिया माइनर। माइनर का मतलब है कि दे आर ओनली द कैरियर। अब किस तरह से एक्चुअली हमारे अंदर जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन आती है पेरेंट्स से, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ पेयर। पेयर कैसे बनता है कि एक इंफॉर्मेशन पैटर्नल जेनेटिक इंफॉर्मेशन से आती है, जेनेटिक सेट से आती है, दूसरी मैटरनल जेनेटिक सेट से आ रही होती है। तो if we receive the same genes from both sides, तो हम जो है उसके लिए उस कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट हो जाते हैं, एंड फॉर एनी मींस वी एग्जिबिट दैट कैरेक्टर, पर्टिकुलर कैरेक्टर। लेकिन अगर हमारा पेरेंट्स जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डिफरेंट जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं और इनहेरिट कर रहे हैं, इफ पर्सन इज इनहेरिटिंग अस एंड द अदर पेरेंट इज नॉट इनहेरिटिंग अस द सेम जीन, तो हम जो है कैरियर होते हैं उसके सिर्फ। तो थैलेसीमिया माइनर वाले जो हैं दे आर ओनली कैरियर। लेकिन अब क्या होता है कि व्हेन वी गो फॉर ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन, जब हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है वो जीन्स इनहेरिट कर रहे होते हैं, हमारी बारी है कि अब हम जीन्स देंगे, तो हम क्या करते हैं, हम अगेन अपने जीन्स को दो सेट में डिवाइड करके आधी जो है एक जो है सेल को दे देते हैं, आधी दूसरों को। तो अब क्या है, हम कैरियर तो हैं, हमारी लाइफ को शायद इतना इफेक्ट नहीं करेगी ये चीज। And usually the minor people never get to know that they are thalassemia minor। तो इसी वजह से वो नॉर्मली मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, और नॉर्मली पार्टनर चूज करते हैं, रैंडमली दे पिक द पार्टनर। और उसके बाद जो है व्हेन दे गो फॉर ऑफस्प्रिंग, तो फिर क्या होता है कि दे आर इनहेरिटिंग
one thalassemia allele to each of their न्यूबॉर्न। और अगर इनका पार्टनर भी इन्हीं की तरह माइनर हुआ, एन अननोन माइनर, अ साइलेंट माइनर, और वो भी सेम अलील जो अपने पास से आधों को दे रहा है, तो फिर क्या होगा कि देयर आर हाई चांसेस, देयर आर अराउंड 50% ऑफ चांसेस कि उनका ऑफ स्प्रिंग जो है थैलेसीमिया मेजर करेगा कैरी। ठीक है, तो कैरियर का जो है इम्पोर्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है। थैलेसीमिया मेजर तो बेचारा है ही, वो सफर कर रहा है, लेकिन थैलेसीमिया माइनर को भी हमें जो है लाइटली नहीं लेना होता, उसको बहुत ज्यादा टेक्निकली डील करने की जरूरत होती है। सो these are the causes of thalassemia. This is solely caused by genetic inheritance. अच्छा जी, impact of thalassemia on families. Thalassemia का impact families तो शायद बहुत छोटा word है। They impact the societies, they impact the economies, in fact. Because thalassemia can have a profound emotional, financial, and psychological impacts on families. अगर family में if there is a normal family और उसके अंदर अगर एक भी thalassemia major है, the family cannot run in a normal way because they have to go to hospitals every now and then, every other day, for blood transfusions, sometimes for chelating therapies, and sometimes for because the patient is sometimes suffering from iron influxes। तो फैमिली, जो पूरी फैमिली है वो सफर करती है। उनमें से कोई भी शख्स जो है कमिट नहीं कर सकता फुल टाइम स्टडी या फुल टाइम जॉब को, या कोई वो दूसरी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, बिकॉज उनका एवरी अदर डे जो वर्किंग आवर्स होते हैं, जो नॉर्मल आवर्स हैं जिनमें स्टडी, जॉब या बिजनेस किया जाता है, वो टाइम उनको हॉस्पिटल में देना है। बिकॉज थैलेसीमिया मेजर पर्सन कैन नॉट डू एनी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट वो बेचारे इस काबिल भी समटाइम्स नहीं होता कि वो हॉस्पिटल जा सके अपने ओन पे, या हॉस्पिटल में वहां पे कुछ वेटिंग या प्रोसीजर्स को वो गो थ्रू कर सके। तो दिस इज, आई वुड से, इम्पैक्ट ऑफ थैलेसीमिया इज ऑन इकोनॉमीज एंड सोसाइटी। सो वी मस्ट take steps to get rid of it, to control the spread of this thalassemia. Managing the condition often requires frequent medical interventions, which can be emotionally taxing and financially burdensome for families. हमारी ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हमारे जैसे सोसाइटीज के अंदर स्पेशली जहाँ पे मेडिकल जो है वो फ्री नहीं है, दैट कॉस्ट अ लॉट, तो वहां पर जो है ये बहुत बड़ा एक इमोशनल और फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, स्पेशली when the whole family is unable to work to make finances। उस वक्त ये एक और एक्सपेंस जो है उनके ऊपर, ये बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। फिर हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन को बहुत ज्यादा फेवर नहीं किया जाता, तो ब्लड अरेंजमेंट भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है इस फैमिली के लिए, क्योंकि उनको बहुत होती है। they keep requesting the people and relatives to donate blood so that they can find the matching blood group, ताकि अपने पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करा सकें। अदर सोशल एंड मेडिकल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड आर आयरन इनफ्लक्सेस। होता ही है कि हम डिफरेंट, अच्छा सबसे पहले तो एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आपको आइडिया होता है, हमें नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो इतना सफिशिएंट हो कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज ना कराना पड़े। खुदा ना खास्ता किसी भी हेल्दी पर्सन को भी अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो वहां पे देयर आर हाई चांसेस ऑफ हैविंग allergies, infections, reactions, and some of the other infections जो कि दूसरे तरीके से लीथल हो सकते हैं। तो इंसान को पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए, लेकिन ये एक हेल्दी की बात हो रही है, और ये बेचारे ऑलरेडी इतने बीमार होते हैं, इतनी सफरिंग में होते हैं, एंड देन दे आर गेटिंग द ब्लड फ्रॉम आउटसाइड, तो इनको उसको सूट करना, एडजस्ट करना बॉडी को, दैट टेक्स द टाइम। और जब तक कि वो एडजस्ट